Hi guys, welcome back to the channel. Last class we have completed the corticosteroid things and we have started with condition of developmental disturbances, in which we have started with lingual salivary gland depression. Okay, let's continue this. So we have seen about some of the introduction for lingual salivary gland depression. Now coming to the radiographic findings, depression of submandibular gland will usually create a well demarcated radiolucency in the posterior border of mandible below the mandibular canal outline. यहाँ तक हम लोग लास्ट क्लास में देख लिए थे. Okay. In past, this was termed as Staphne bone cyst, which was a misnomer and misleading term. Rare depression will be more irregular in their borders. जनरली क्या होता है, जो सब मैंडिबुलर डिप्रेशन होते हैं वो वेल डिमार्केटेड रेडियोलुसेंसी होता है, लेकिन कभी कभी कुछ रेयर केसेस में जो डिप्रेशन होते हैं दे मे बी मोर इरेगुलर in their borders and truly suggest a neoplastic process. Okay, now depression of submandibular हो गया. Now coming to depression of sublingual gland will appear as ovoid or round radiolucencies that are well demarcated but do not have sclerotic borders. So they are well demarcated but they do not have sclerotic borders. Okay. These are more diagnostically troublesome than the submandibular gland depression because they are less common and therefore overlooked. तो जो ये सबलिंगुअल ग्लैंड डिप्रेशन होते हैं दे आर डायग्नोस्टिकली मोर ट्रबलसम, क्योंकि वो इतने फ्रीक्वेंट होते नहीं हैं इसलिए ओवरलुक्ड हो जाते हैं. Additionally, the radiolucencies are superimposed over the root apices of anterior teeth and therefore strongly mimic a periapical granuloma or a radicular cyst. और या तो आधे केस में ऐसा होता है कि सुपर इम्पोज हो जाते हैं रूट अपाइसिस पे, तो वो पेरियापाइकल ग्रैन्युलोमा या रेडिकुलर सिस्ट के लिए मिसडायग्नोस हो जाते हैं. नाउ कमिंग टू डिफरेंशियल डायग्नोसिस, अगर पोस्टीरियर में मतलब सब मैंडिबुलर डिप्रेशन है तो मेनली जो अपना डिफरेंशियल डायग्नोसिस होगा वो केसी अमीलोब्लास्टोमा, मिक्सोमा, इडियोपैथिक बोन कैविटी. और अगर एंटीरियर में है मतलब लिंगुअल डिप्रेशन है, सबलिंगुअल डिप्रेशन, तो केराटोसिस, ओडोंटोजेनिक ट्यूमर, पेरियापाइकल ग्रैन्युलोमा, रेडिकुलर सिस्ट एंड समटाइम्स इडियोपैथिक बोन कैविटी ऑल्सो. Okay, we'll be dealing with this idiopathic bone cavity. The next topic will be this only after. Okay, now coming to diagnostic workup, lingual salivary gland depression diagnosed by discovering the radiograph. Pulp testing करते हैं to rule out any other inflammatory dental disease. Occlusal radiograph to rule out the expansion. Cone beam CT scan, CT scan xylography or plain CT scan with contrast is also used for the diagnosis. CT scan xylography can be accomplished by injecting 0.5 ml of a water soluble radiographic dye into a submandibular gland. तो साइलोग्राफी में क्या करते हैं हम लोग, वाटर सल्यूबल डाई यूज़ करते हैं, उसको सबमैंडिबुलर ग्लैंड में डालते हैं एंड देन इट इज़ यूज फॉर द डायग्नोसिस. Histopathology, it is not required and treatment is not indicated. That was all about lingual depression. Okay, now the next one is idiopathic bone cavities. Coming to the clinical presentation and pathogenesis, they are empty cavities in bone that have an unknown cause. उनका cause unknown है. They have erroneously been called traumatic bone cysts for many years, but ये सही नहीं है because they lack an epithelial lining required of cysts and are not specifically related to trauma. Most idiopathic bone cavities occur in mandible and few occur in maxilla. It is an incidental radiographic findings. लेट टीन्स और अर्ली 20s में ज़्यादा मिलते हैं. इन जॉ इट मोस्टली अकर इन द बॉडी ऑफ मैंडिबल बट समटाइम्स अकर इन सिम्फाइसिस, रेमस एंड कॉन्डाइल.
often mild expansion, and the cortices are thin but not perforated, and the teeth associated are vital. Okay, that's all for today's class. We'll be continuing this in the next class. Till then, like, share, subscribe, and comment. Bye.